नमस्ते मित्रों, चैनल वी आर आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एक संवाद के एपिसोड में हमारे साथ हमारे देश के एक वन ऑफ द एमिनेंट ब्रिलियंट आर्टिस्ट, एब्स्ट्रैक्ट पेंटर्स, who has created with thorough exploration and experience a huge body of work, and his abstract work has various dimensions which we will be talking in this discussion. So today with us we have Manish Pushkale, an eminent abstract painter of our country, who's based in Delhi and who has his roots from Bhopal. A warm welcome, Manish ji. Channel We Are Artists में आपका स्वागत है. Thank you, Vasanji. Thank you so much. Indeed, it's a great pleasure to have you with us and to talk about your art and your art experiences. It's like, we all know, I mean, the art fraternity knows, and in fact, even the society in large knows that Manish's biodata runs huge. He needs no introduction with the brilliant solo shows, group shows, awards. And he also has been, he's also the recipient of the reputed Raza Award, which the Raza Foundation bestows. So your biodata, it runs huge. But before I get into the main subject of your artwork, I understand that you have your master's in geology. Yeah. Right. Now, how was that shift from geology to art? One thing, and second thing is that, see, initially when we are an art student, we try our hands in many things. We try our hands, we explore, we understand, we try. But there will be a moment or a turning point wherein each one of us, we identify that this is my subject and this is what I'm going to explore. Yeah. So I would like to know two things. One is like, what made you shift from that Masters of Geology, that beautiful subject, to another beautiful subject? And when was that clicking point saying that this is my route and this is my exploration? Well, yes. I always keep thinking on this because the life is not that straight. And sometimes it's not that easy to recognize that immediate moment and the point which you're calling the turning point. In fact, I am more interested in the returning points. And they are many. मैं कल ही किसी से बात कर रहा था कि जीवन का एक ऐसा प्रसंग है जिस पे मैंने ना कभी लिखा, ना ही शायद किसी से ज्यादा शेयर करा, और ना ही उसको मैंने अपने थॉट प्रोसेस में कोई प्राथमिकता दी। लेकिन हाल ही में वो अचानक से सिर उठा के खड़ा हो गया, एक अतीत का एक प्रसंग, और मुझे लगता है कि वो उसका भी एक स्थान है, उसकी भी अपनी एक जगह है। दरअसल बात यह है, बचपन की बात है ये, कि भोपाल में जो हमारे पिताजी एक सरकारी नौकरी में थे, छोटी सी नौकरी थी, बहुत साधारण निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हूं मैं, तो उनको एक सरकारी मकान अलॉट हुआ, 2 कमरे का। हम लोग छोटे थे, मेरे ख्याल से मैं 6वीं में था। बड़े खुश थे कि एक घर मिला है हमको, उसमें आगे एक बगीचा है, पीछे एक आंगन है, आंगन में एक आम का पेड़ है, और उसकी छत टीन की थी, ऐसी पक्की आरसीसी सीमेंट की छत नहीं थी। टीन की मतलब ऐसी थी कि अगर आप उस पे जम के पत्थर मारें तो उसमें छेद हो जाए। बड़े खुशी थी कि एक घर मिलेगा। मेरी माँ भी बहुत खुश थी।
जब हम वहां पहुंचे और सामान जो गृहस्थी का होता है उसकी शिफ्टिंग चल रही थी, तभी एक खबर मिली कि वो 2 मकान के घर में से एक मकान किसी और एक परिवार को भी अलॉट हुआ है। तो पूरा सेंस ऑफ स्पेस जो था, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे थे, वो अचानक से स्प्लिट हो गया। उसमें एक अचानक से डिस्प्यूट पैदा हो गया और उसमें अचानक से एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई कि आधा स्पेस अब हमारे पास नहीं है। इसके साथ ये क्यूरियोसिटी भी पैदा हो गई कि जो आने वाला है वो कौन है। बहरहाल हम लोग तो पहुंच गए, लेकिन जो परिवार आया वो पति पत्नी का परिवार था। उनके यहाँ कोई बच्चे नहीं थे। वो आंध्रा से आए थे और ये जो सज्जन जो थे, इनका नाम था दियावार और इनकी पत्नी जो थी, इनका नाम था अंजलि। उनको अंजनी भी बोलते थे। तो ये दोनों वहां पे पहुंचे। पति थोड़े ठिगने कद का, पत्नी जो है बहुत बड़े कद की, थोड़ी ऊंची साड़ी पहनने वाली। उनकी थोड़ी सी मूछें भी थीं और एक विचित्र सी बॉडी लैंग्वेज। ये जब आए तो मैंने देखा कि पत्नी एक हाथ ठेले पे बैठी हुई है, एक संदूक लिए, और पति पीछे से ठेला ऐसे लेते हुए आ रहा है। मैं बड़ा चौंका। मोहल्ले वाले भी चौंके कि ये कैसा आगमन है। थोड़ी ही देर में उनसे जब बातचीत हुई, एक परिचय हुआ, तो समझ में आ गया कि ये थोड़े से हिले हुए लोग हैं। दोनों थोड़े से, पागल कहना तो शब्द थोड़ा हार्श होगा, लेकिन सामान्य नहीं थे अपने व्यवहार में, बातचीत में। धीरे धीरे हमने समझा कि अब उनकी हरकतों में, और उनमें कोई विष नहीं था, हरकतों में कोई बदतमीजी नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो सामान्यतः नहीं होती। कि जैसे घर में कोई मेहमान आया है हमारे घर में, और हमने सामने उनकी चाय रखी, जैसा कि हिंदुस्तानी घर में होता ही है। अचानक से ये सज्जन आए और वो चाय का कप लेके चले गए। उनको कोई गिल्ट नहीं, उनको कोई तकलीफ नहीं, उनको कोई मुश्किल नहीं। ये सब हमें होता था कि ये कैसा आदमी है, ये कैसे सामान लेके चला जाता है, मिठाई रखी है तो उठा के चला जाएगा। लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे याद है कि वो मुझे लकड़ी के खिलौने, खुद लकड़ी तोड़ के लाते थे बना। ही वॉज अ वेरी गुड क्राफ्टमैन। बाद में मुझे पता लगा कि उनकी जहां नौकरी लगी थी भोपाल में, वो एक ड्राफ्टमैन की हैसियत से लगी थी, और वो बहुत अच्छी ड्राइंग करते थे। ड्राइंग्स आर्किटेक्चरल होती थी। अब ये बात है 6वीं की, 7वीं की, यानी कि मेरी उम्र लगभग 11-12 साल की रही होगी। ये प्रसंग मैं बिल्कुल भूल गया। ये वही हैं जिन्होंने पहली बार मुझे बीड़ी पीना सिखाया। ये खुद बीड़ी पीते थे और अक्सर पेड़ों पर बैठे रहते थे, दफ्तर जाते थे, शाम को आते थे, और कुछ विचित्र विचित्र से उपक्रम करते थे। लेकिन मुझे बहुत स्नेह करते थे। मुझे वो कंधे पे बैठा के मोहल्ले पे घुमाते थे, हाथ पकड़ के ले जाते थे, और बहुत प्यार से। उन्होंने कभी मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। उन्होंने मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे मुझे शिकायत हो। इनफैक्ट मेरी अगर कोई स्मृति है उनको लेके, तो एक स्नेह की है। आई डोंट नो, आज ही केम टू माई रिमेम्बरेंस इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। इनफैक्ट ही इज, आई एम थिंकिंग अबाउट हिम फ्रॉम लास्ट 2-3 days, कि ये एक इतने विरल व्यक्तित्व को मैं कैसे भुला बैठा था। So Baharal, as I said, that it's not about a turning point. This is a time to of the many returning points. So this is one of the point. नंबर 2, तो इस तरीके से जो एक ड्राइंग का फर्स्ट एनकाउंटर
बच्चा तो हर कोई करता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाहर से कोई एक फर्स्ट एनकाउंटर, मुझे याद है उनकी मोटी मोटी ड्राइंग, कुछ किताबें थी जिसमें उन्होंने शायद अपनी पढ़ाई के दौरान की आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स और वो सारी रिसर्च स्टडीज जो होती है, जिसको बहुत ही करीने से संभाल के रखा था उन्होंने। और उनकी हैंडराइटिंग इतनी कमाल की थी जैसे टाइपराइटर की हो, इतनी खूबसूरत हैंडराइटिंग। तो एक ये स्मृति बचपन की बड़ी गहरी लगती है मुझे और महत्वपूर्ण लगती है। हम स्वयं एक ऐसे परिवार से हैं जिसका कलाओं से सीधा साधा ऐसा वैसा ऐसा कोई वास्ता नहीं था कि डायरेक्ट कोई परिवार से कोई कलाकार हुआ हो, या बल्कि दूर दूर तक परिवार से कोई कलाकार नहीं। लेकिन एक चीज जरूर पता लगी, ये भी मुझे देर से पता लगी, कि ये जो सरनेम है मेरा पुष्कले, जैसे अभी आप कह रहे थे, ये दरअसल मेरा गोत्र है। और एक मुझे श्रवण बेलगोला के पास एक जगह है कर्नाटक में, जैन बद्री मूड बद्री, ये दो जगह हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये, इनकी महत्ता सिर्फ इनकी धार्मिक आइडेंटिटी के कारण नहीं है अकेली, ये दरअसल में एक आर्काइव भी है, जहाँ पे कि पाम लीव मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इस टाइप से बहुत सारे ग्रंथों को बहुत ही तरीके से, लगभग 12वीं शताब्दी के बाद के तमाम ग्रंथ वहां पे सुरक्षित हैं। तो इट इज अ काइंड ऑफ आर्काइव। तो वहां पे मैं किसी परिचित के साथ मेरा जाना हुआ, और उनकी विशेषता थी इन ग्रंथों को थोड़ा पढ़ने में, और इस पे उन्होंने काफी समय के अपना जीवन दिया है अपना इस काम के लिए। तो उन्होंने मुझे गोत्र से मुझे बताया कि तुम दरअसल, जो तुम्हारे पूर्वज जो रहे हैं, हम कितनी पीढ़ियों को जानते हैं अपने, कम से कम हमारे परिवार में मेरे पास जो ज्ञान संज्ञान है वो सिर्फ 4 या 5 पीढ़ी तक का है। तो जब आप 4 या 5 पीढ़ी तक पहुंचते हैं, तो जैसे मेरे पिता सरकारी नौकरी में थे, मेरे दादा जो हैं वो एक आधे समय खेती किसानी करते थे, और बाकी समय एक तीर्थ स्थान है वो उसकी देखभाल करते थे। उनके पिताजी जो हैं वो खेती किसानी करते थे, यानी कि 3 पीढ़ी, चौथी पीढ़ी हम हो गई, 5वीं पीढ़ी मेरा बेटा हो गया। सिर्फ ये 3 4 5 पीढ़ी तक का एक आइडिया है, उसके पहले का नहीं था। उसमें मुझे लगभग 16वीं शताब्दी तक का पता लगा कि जो फोर फादर्स हैं वो कर्नाटक से ही इधर पे कभी आए, और हम लोग पेशे से उस जमाने में आर्किटेक्ट्स थे। अब ये देखिए ये लिंक कहां से बनता है। जो पुष्कले हैं वो दरअसल वास्तुशास्त्री थे। धीरे धीरे, जैसा कि सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ, माइग्रेशन के कुछ ना कुछ कारण बने होंगे। माइग्रेशन के कारण धीरे धीरे आपकी जो एक लिनियरिटी जो है, आपकी जो एक आपकी जो एक पहचान जो थी वो धूमिल होती गई। और फिर उसके बाद पहचान के साथ जीने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया जीना, और जीने के लिए कुछ दूसरे संसाधन की तलाश की गई होगी। ऐसे करते करते धीरे धीरे जो हम लोगों का जो एक पूर्वजों का अपनाया हुआ जो रास्ता था उससे हम भटक गए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कुछ कृपा ही है। हम दो भाई हैं, मेरा भाई बिल्कुल दूसरी दिशा में है, वो अपने तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं कुछ कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही मुझे ये पता लगा कि मैं कलाओं में हूं, या मुझे जैसे ही पता लगा कि जो मेरी दिलचस्पी अब जो बन रही है वो कुछ अलग है, पूर्ववर्ती पारिवारिक पूर्ववर्ती दिलचस्पियों से कुछ अलग है, लेकिन जब ये मुझे पता लगा कि पूर्वज ऐसे करते थे, तो कहीं ना कहीं एक विचार की जो प्राथमिकता जो थी उनके जीवन में, और जिस विचार की प्राथमिकता को पाने की मैं कोशिश करता हूं अपने जीवन में, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रस्सी के दो सिरे हैं जो आपस में आके मिल रहे हैं। लेकिन इन दोनों के मिलान में लगभग 7 से 8 पीढ़ियों का समय लग गया। तो मैं कहां से जवाब दूं जब आप एक सर्कल में बैठते हैं, या जब आप महसूस करते हैं कि आप जिसको बिलोंग करते हैं वो एक सीधी लाइन नहीं है, इट इज अ सर्कल, देन वेयर टू एंड वेयर टू एंड इट। True, true. Well said, well explained.
Thank you. Your work of art depicts two things. When I was going through all your paintings, पहले के और अभी के जितने मुझे images मिले ऐसा, I found two interesting things. That one is that each of your painting throws some light, but this light is not something that comes from the space or from the heavens. It's from the earth. Your entire composition, colors, your paintings, your work of art has that has a very earthy feeling. And that is where I maybe I don't know if I'm wrong, please correct me. मुझे ऐसा लगा कि your study in geology somewhere might have knowingly or unknowingly brought you to that earth element wherein you are trying to explore the things like. But one very curious point, I think last time when I was talking to you, when I was writing the article about you, I found one thing, like usually all painters, the forms and compositions go from a thickly populated forms to lot of minusing all that and going to a very clean space, clear space. Whereas one thing I found that yours was a return migration, where your initial paintings, if I see, like they were all from a clean space, but later on it started getting thickly populated with lot of forms, dots, macro, minor, everything and all. How is this like when the world was traveling one way? Like, how did you manage coming to the written thing? Like, was it knowingly, unknowingly, or was it like? Did you enjoy this or the return? See, return migration. It's a sociological aspect as well. Wherein एक जमाना था जहाँ पे लोग गांव से शहर जाते थे, अभी वापस शहर से गांव आ रहे हैं, या अपने देश से परदेश जाते थे, अभी परदेश से देश को वापस लौट रहे हैं इसमें. एंड उसकी एक बहुत, इट्स अ वेरी कंटेम्पररी एस्पेक्ट एज वेल. Yeah. So how can you just throw some light on this aspect? I don't know if my reading is right or am I right, wrong, or whatever it is like. But this is one thought, one feeling that I got. No, it's not about right and wrong. It's about an observation, and I respect it, and I find many matches between our observations. Okay. You know, let me firstly say, as being a painter, let me answer it from a painter's capacity. You know, the whole notion of the landscape from very early period to the current contemporary time, the role of horizon kept its centrality. The horizon, the sustainability of the horizon in the practice of the landscape in visual art sustained unshakably. And this happened simply because the moment we say landscape, you know, the linear perspective immediately came into an existence. Viewing the world or the landscape and capturing it as a memory of your retinal reality is one thing. And many artists have done that, as I said, from many centuries to today's time. And some have done a great job. They really have contributed in a great manner, in a manner of the painting. Now, let me bring my geologist on the forefront. And it says that what we perceive or what we see something which is above the horizon. And what we see on earth
is the skin of the earth, but there is something below that skin also. My interest in archaeology, my interest in geology, my interest in paleontology, they gave me a reason to dig, to excavate, to go below, to go deeper, to explore the core, to understand what is there below the skin of the soil. So far, the memory of sky is prevailing. So far, the horizon, which is which is addressed by sun on every morning and by moon in every night, has got its centrality. I am interested in the darkness and the lights which prevails below this horizon. And the moment you step into this zone with your archaeological and the geological insight, it gives the huge reason for the new pulsations in your mindset. It makes you restless. It's a mystic world. That part of horizon, the below the horizon, the roots of the horizon were never been addressed. That is also landscape. True. But the landscape, the darkness, in the embedded darkness. We are aware of the landscape which is above the horizon. I am talking of the landscape which exists below the horizon. You are aware of the trees and the flowers and the fruits. But I am trying to understand the roots. Excellent. Now, I get your point. I think, and this statement of yours leads me to the next question. That is, see the basically the Pancha Mahabhuta, the five elements. Each one of them are very powerful. They are equally mysterious as well. There's a good amount of mystery in each of the five basic elements. Now, in your paintings and compositions, it is that one earth element which is there, and this earth element has its own, it has its a great sense of fertility. It has a great sense of nurturing, and there is a mystery element as well. When I see your paintings, especially it can be the watercolor ones or the acrylic ones, wherein you have layers of thin colors coming one over the other, and that brings a great sense of mystery. Now, apart from it being like very fertile, very nurturing, mysterious, there is also one feeling which I get, and that is sensual. Something like, a sexual, this complexity. A sensual feeling is a complex feeling, basically. And maybe if I can see, being an artist who works on erotic artworks, I always say that, see, sex is very complex one. Why? Because it has elements of the body, the mind, the soul, the emotions, psychology. There's so much of things, and it is two different bodies working on this. That's why it is so complex, like, compared to all other emotions, right? Now, the sensual element that I find in your compositions is the different layers of colors. They depict or they give that sense of that sensuality as well, and maybe that also explores the mystery element, or that also presents a mystery element. Now, this is, as a viewer, I observe this as something like, but as an artist, when you are exploring, right? Because what I understand, with the discussions that I had with you earlier and right now also, it's like, you have you have a good background of art. It can be about the science,
geology, spiritual, the society, contemporary economics, everything and all. Now, as a painter, how do you define, or what is that thought process of you to depict that mystery, keeping the sensuality, keeping the fertility of it, keeping the nurturing element of the entire earth element on your canvas or paper? Like, I hope I have you have understood my question as such. I'm actually trying to understand myself. Thanks for putting the question. You know, uh, where, I'll, where, sorry to cut you. The reason why I got this question or this thought is like, see, you're from Bhopal. You mentioned that you are from a very middle class family with a very a background which is not that elite. Okay. Now your roots are very much from the ground, but whereas you have explored or you live in large cities, in big cities, you have traveled big cities, you are interacting with, but your roots are back, so that's why. Now this urban and rural connection also is somewhere getting, and that is where I find, like, see, this urban and rural connection of yours which is going on in your mind or thing, and whereas the exploration is at another vertical. So I always find it as a quadrant, because on from here to, you're going from urban to rural, but from here you're going from it being very the sensual and the mystery part and the philosophical aspects of it. So I just want to trying to thanks find out, for like, as an artist, how do you get into that quadrant, like? noticing these intersections. And that's what I said, that the life is not a simple line. It has its own complexity, and it is very organic by its nature. You know, getting the, at least finding the axis on which you are moving from here, or you're oscillating between the binaries and the polarities and the ambiguities and whatever, you know. But at least seeing those axes in on between which you are oscillating in between, I think seeing them is very, very important. What you asked, all these questions are, I'm actually going through. I'm thinking about it because because uh, 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 simply for the fact of the matter that uh, I want to take myself seriously. So I view and review myself. I try to understand what I'm doing, and then that gives me a window to explore, to imagine, to think, to view, and to review. Uh, Before coming, I can't come to these points in a straight, precise manner, because there are many interconnected facts and the factors which should, which I should bring into the notice. How I started painting. It is not like one day I started, I got the pen and the paper, or color and a paper, or color and a canvas, and suddenly I've started painting. It's not that. I also will not say that I'm a born painter, because every child is a born creative mind. Then what are those stances and the circumstances? What are those uh, peripheral and the central tensions responsible uh, for the carving of this mindset or the personality or the person whosoever I am? I want to review them. I want to really, and I try my best to analyze them. So there are many factors which composes you. Of course, the family background. संस्कृत में एक अच्छा शब्द है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड इज अ वेरी वेग टर्म. संस्कार, आपकी पारिवारिक संस्कृति, आपकी पारिवारिक आध्यात्मिक चेतना, आपकी प्राथमिकताएं जो परिवार से आपको मिली. अ, इन सब चीजों को लेके मैं समझने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली मेरा रियल बायोडेटा है क्या.
And what are those uh, bio ingredients also, which are making my data? The biodata which you are talking about initially in the beginning while introducing me, that's a professional biodata. But there is another data which is bringing that other professional data into the existence. I'm talking of that data. That is the real True, biodata. true. उसको खोजने की कोशिश है एक, ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सब समझ गया, लेकिन वो प्रश्न लगातार जारी है। बात यह है कि जब मैंने भारत भवन में ग्राफिक्स सेक्शन को ज्वाइन करा, जहां पे कि यू गेट अ फैसिलिटी टू डू द प्रिंट मेकिंग, एंड बिकॉज I didn't came from a trained background, and printmaking is quite a technical process. So I took my time to understand the technicalities of it. I took my time to gain my confidence to do a print, and I also took my time to break my hesitations. Uh, I took a lot of time, but one day I got that, you know, uh, the inner kick against my inertia, and I did one print. This process of intaglio, especially in etching or in etching, is a very interesting process in which you apply ink on a plate and then you wipe it. So in this process of wiping, the material which is in excess get wiped off, and only the required amount of the material in the form of ink got the sustainable space in the veins of the drawing which you have etched on the plate. And when you get the print of it, you get the image of that minimal suspension. When you see the drawings of Lakshma God, you know, a line thin like a hair, with its firmness, with its flowness, with its fluidity, and with its sophistication comes. And that's what the mastery of the Lakshma God is. I got a very philosophical, probably a take, that this removing the color from the plate is important in print making, in etching, whereas in painting, it is about applying the color. As you said, that there are many layers. Layers means colors over colors over colors. Those paintings are looking different because it is not about the layers. Though there is a layer, in what way, I'll tell you. It is not a layer of the body of a color. It is a layer of the residue of a color. And the memory of the layer is always about the body of a color. True. But, and that is the reason of the light. It is not a color of the light, it is a color of the residue. It is a color of the erosion. It is a color of the memory. It is a color of the past. It is a color of the colorlessness. It is a color of transparency. It is a light of the transparency. It is it is a light of the erosion. So because the memory is about the layer in a very opaque manner, but here I was doing, and it's nothing new. Miniatures में ऐसा कुछ हुआ है, पहले सब हो चुका है हमारे देश में, और हमारी कला के जगत में हम लोग कुछ नया नहीं करते हैं, और प्रकृति में तो सब पहले से हो ही रहा है. आप उसको व्यू और रिव्यू कैसे करते हैं, दैट्स मेक्स द डिफरेंस. वो कभी कभी हमसे कुछ हो जाता है और हमको पता नहीं होता. जब आप रिट्रोस्पेक्टिवली अपने आप को देखते हैं तो कई बार आपको आपकी की हुई चीजें दोबारा नई दृष्टि से, नए सिरे से दिखती हैं. आई थिंक मुझे नहीं पता था कि उस समय क्या हो रहा है. मैं उसको एक टेक्निक जैसा कर रहा था, लेकिन बाद में मुझे उस टेक्निक के पीछे छिपे
उसके दूसरे एस्पेक्ट, जिनको हम फिलोसफिकल एस्पेक्ट भी कह सकते हैं, उसके नैरेटिव में पहुंचने में मुझे बहुत टाइम लगा, बिकॉज आई वाज नॉट डीलिंग विद द सब्जेक्ट. The process was always important and can remain in its centrality from the beginning in my career. The process. So sometimes when you're asked to narrate your painting, or when you're asked to speak something on your work, you are expecting some story. And we have enough examples around us who very beautifully narrate their work because there is a space of the story in them, or these works exist along with some story. The painting which I do, and the painting and the gharana I belong to, in one sense, it is a gharana where you see the painting and then it allows you to come into the imagination rather than to the conclusion. And coming to the imagination takes time. True. I agree with you 100%. I mean, we as a human mind always thinking and imagining something, our whole utopia is based on that imagination. लेकिन वहां पे आप you are imagining something which is not existing. यहाँ पे the work is in front of you. Correct. So between the memory and the imagination, between the image and the imagination, between the this oscillation, this space to migrate and to return back, is a space which is in a very organic form. The migration which you are talking, like my movement, my forefathers' movement from Karnataka to Sagar, my father's movement from Sagar and Damoh to Bhopal, my movement from Bhopal to Delhi, and so on. It will go on. That's okay. But uh, but that's okay. I mean, it's not that important. This aspect is very much evident in your paintings, because when I go through your body of work, I definitely see this oscillation between the time and space. Yes. It's like, and your colors and compositions speak about the time and space. Which that I can't say and about I can't say about time because it is not visible. But the space you definitely are dealing with. But if you are saying this, I'll take it as a compliment because the time remains in you. see, because why I tell that is because as abstract painters, I'm of the opinion that abstract art is first एक सोच है, वो सोच को, वो अनुभव को, एक फिलॉसफी को विजुअली में कितना उतारते, क्या उतारते हैं, कभी कभी तो पूरा फिलॉसफी भी उतर नहीं पाती है कैनवस पे. सो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट पेंटर्स आर लिविंग उस सोच में, उस फिलॉसफी में जहां पे बढ़ोतरी, एंड उसमें से जो निकला निकला कैनवस पे एक विजुअल लैंग्वेज लेके. And that is why I find your paintings, they pose some peculiar challenges. So I was always curious, like, are you trying to face or encounter a challenge, or are you trying to create a challenge and then encounter it? See, uh, if there is a one answer to it, then it means that you're not talking about art. Number one. Number two, I don't think that an abstraction is about painting your philosophy or your ideology. I don't think so. Okay. That's why there are many examples in which some of the finest painters of our time, they become silent when they're asked to speak about their work. They will speak of I mean, their whole expression is very circumlocutory. They will speak about the peripheries but not about the center, and I can understand it. In fact, I trust in that. Someone asked me, किसी ने मुझसे पूछा कि आप हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं. ये मेरे बेटे के स्कूल की बात है. मैं एक पीटीएम में गया हुआ था और टीचर के साथ बैठ के बात कर रहा था, तो बाद में टीचर ने मुझे प्राइवेटली बोला कि आपकी भाषा, आप हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं. मैंने बोला, जी मेरी मातृभाषा है और
ये क्या समय है कि एक जिम्मेदारी के साथ जब अपनी भाषा को बोलते हैं तो आपको उस पर तारीफ मिलेगी। The next important aspect what I find in your painting is it has an excellent tribal grammar, a contemporary vocabulary, and a modern poetry. You know, this three-layer what do you say expression is not easy. In fact, It's when very you read this for the first time on my work, I loved this observation, yeah, and many people appreciated this observation. excellent. Thank you. So, can you just throw some light on this? Like your expressions has this three-layer: a tribal grammar, a contemporary vocabulary, giving a modern poetry. This is what my background is. You know, the atmosphere, as I said, that I am not a result of a, I am not a result of an academic system. In fact, I am more a result of an institution. I cannot imagine my existence. I really cannot imagine myself अगर भारत भवन नहीं होता भोपाल में। और भारत भवन एग्जैक्टली यही है जो आप जिन तीन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। And I'm happy that if my components are so clearly visible, I take it as a a compliment actually. भोपाल की मिट्टी में ही कुछ है. I always मैंने जब भी मैं the other day when I was speaking to Yusuf, I also when I was talking to others और भोपाल के जितने भी मैं बोला भोपाल की मिट्टी में ही ऐसा कुछ है जहाँ पे एक बार बंदा गया एक बार उस मिट्टी को छू लिया उसने. I think so. I don't know. या पानी में कुछ है उसमें या हवा में कुछ है उसमें. It definitely has that divine energy. वरना जैसे स्वामीनाथन wouldn't have opened. जैसे जैसे संगीत में धारवाड़ है, Yeah. या संगीत को लेके धारवाड़ की जो प्रतिष्ठा और मान्यता है, वैसे ही रूप को लेके यानी कि विजुअल डिस्टिंक्शन को लेके जो स्थान भोपाल का होना चाहिए लोक स्मृति में और एक पढ़े लिखे सामाजिक जगत में भोपाल की जो जगह होनी चाहिए वो अभी हुई नहीं। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो उसके पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल को अब ये पहचान मिलनी चाहिए जैसे धारवाड़ को मिली है। धारवाड़ जिस तरीके से अपनी पहचान के कारण एक लोकोक्ति बन गया, Yeah. भोपाल संगीत और साहित्य में. पहचान के कारण अभी तक लोकोक्ति नहीं बन पा रहा। पहचान है, पोटेंशियल है, इतिहास है, चमत्कार है, सब कुछ है मध्य प्रदेश की इस मिट्टी पे, लेकिन उसके बाद भी अभी वो वैसी लोकोक्ति प्रचलित नहीं हुई। ये समस्या किसकी है? ये समस्या उस समाज की है जो उस लोकोक्ति को अपने मानस में जगह देती है। अगर उस मानस में एक किस्म का संकुचन हो जाए, और यही सामाजिक सत्यता, एक जो सोशल रियलिटी है हमारे टाइम की, वो यही है कि एक संकुचित मानस है जिसमें नए मुहावरे, नई लोकोक्तियां, नए उदाहरण, नई स्मृतियों को अपना स्थान बनाने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। बिल्कुल. बजाय उसकी प्रामाणिकता के, बजाय उसकी तमाम चमक के बावजूद उसको जबान पे आने में एक संघर्ष करना पड़ता है। भोपाल दरअसल एक सबसे तात्कालिक संघर्ष का नाम भी है। जैसे धारवाड़ का अपना है, शांति निकेतन का अपना है, चोलामंडल का अपना है, अलग अलग विधाओं की बात कर रहा हूं मैं। भोपाल का अपना है, और भोपाल का ज्यादा इट्स मोर होलिस्टिक इनफैक्ट। Yeah. After all, it is in the center of the country, you know, so it receives the tremor from all over. Yeah. It can be an excellent art capital of India. Exactly. Anyway, Manish, I think in all this discussion, um,
More than discussing the paintings, my attempt always has been that I try to uh, discuss and talk about the thought process, about the experiences and philosophy, because uh, such brilliant artworks are not created overnight. Like I think so you began the discussion with your memories that goes from in your 6th standard to 7th standard, वहां से लेकर और आज तक, मतलब कहीं ना कहीं उसको अलग अलग स्टेज पे वो उसकी पाइल अप होती गई. एंड वो सो आज अगर देखें तो इवन दैट स्मॉल एक्सपीरियंस 6th स्टैंडर्ड में जो हुआ था, वो कहीं ना कहीं आज भी आपके इस पूरे अनुभूति के बीच में किधर तो एक ड्रॉप है वो. एंड दैट इज वाई वो कलाकृतियां बनती जाती हैं, उसकी एक विजुअल पोएट्री बनती जाती है उसमें. एंड your work of art, I really enjoy studying your work of art. I don't view paintings. I try to, जो भी मुझे ब्रिलियंट वर्क दिखते हैं मैं उसमें स्टडी करने की कोशिश करता हूँ. एंड ये करने की कोशिश करता हूँ कि इस कलाकृति की रचना में what would be those factors which have governed or which has created that artistic mind where this output has come. So studying your paintings has always been fascinating and interesting for me. And every time when I go through your works, कुछ ना कुछ नया कुछ मजा दिखता ही है उसमें. So it's always interesting. Yeah. Is there anything else which I've missed out, or would you like to share or tell something like about your work? Yeah, I Yeah. just want to say one thing. In fact, just bring it to your notice. In fact, it's not my statement. Mm-hmm. That, because the kind of work which I'm doing, it's not about the direct depiction of any specific anecdote, of any specific story, of any specific ideology or idea. So, to understand and to give a body of the language to what I'm doing, I try to create a language around those works, but not based on those works. Correct. In the result of that, I wrote one novel Mm-hmm. in 2014, in fact 2013, published from Gyanpeeth. The second part of it is now on the way. I wrote few other books. I wrote articles in newspapers about whatsoever I am seeing, whatsoever I am thinking. उसके कारण क्या होता है कि आपकी जो चित्र के प्रति जिम्मेदारी और भाषा को लेके आपकी जो एक सजगता है, आप उस पे टिके रह सकते हैं. और आप जो मेरा नॉवेल है, जब उसको समय मिलेगा तो आप देखिएगा. इट इज ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन टू अदर लैंग्वेजेस. तो आप पाएंगे कि उसमें जो लैंग्वेज है वो इतने डिटेल्ड लैंग्वेज है, इतनी डिटेल्ड है कि वो एक किस्म के सेंस ऑफ स्लोनेस की तरफ ले आती है. तो जब आप मेरे नॉवेल को देखेंगे और मेरे पेंटिंग को देखेंगे तो आपको बड़ा विरोधाभास दिखेगा. और आपका ये प्रश्न बन सकता है कि आप पेंटिंग तो करते हैं बड़ी एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन जो भाषा आप रख रहे हैं वो तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है. क्योंकि भाषा एब्स्ट्रैक्ट कैसे होगी? भाषा का एब्स्ट्रैक्शन दूसरे तरीके से होगा. वो 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 दूसरे तरीके से होगा. भाषा का एब्स्ट्रैक्शन पैदा होता है जब उससे एक ध्वनि निकलती है, और वो ध्वनि बनती है जब उसमें एक डिटेल आता है भाषा में, और वो डिटेल के कारण वो
ध्वनि में एक धीमापन आता है, एक स्लोनेस आती है, और उस स्लोनेस का संबंध एक एब्स्ट्रैक्शन के साथ उसका संवाद बनता है। लेकिन जब आप उस डिटेल में जाते हैं तो वो भाषा उतनी ही रियलिस्टिक हो जाती है। आप रियलिटी जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, उसके एक एक पक्ष के इतने डिटेल में चले गए, आप इतने माइक्रोस्कोपिक हो गए, एक एक सेंटेंस में जिस बात को आप रखना चाहते हैं उस बात को लेकर आप इतने माइक्रोस्कोपिक हो गए कि अखबार में जिस बात को कहने के लिए एक वाक्य लगता है, उपन्यास में उसको कहने के लिए आपने 6 पेज लगा दिए। और यहीं आके एक जर्नलिस्टिक लैंग्वेज और एक क्रिएटिव लैंग्वेज में अंतर हो जाता है। बिल्कुल। तो ये जो अंतर होता है चित्र में, अगर कभी कुछ जो नहीं पकड़ा ही आता, पता नहीं है क्या नहीं पकड़ा ही आता, लेकिन आपको पता लगता है जिस दिन आप कुछ आपसे होता है और जिस दिन आपसे कुछ नहीं होता है, दोनों का अंतर आपको पता होता है अंदर, उसको व्यक्त करने के लिए भाषा आपको साहित्य से मिलती है। इसलिए मैं लिखता भी हूं। सही बात। लिखने के लिए, वो लिखना मेरे लिए एक विंडो है कि जो यहाँ पे अव्यक्त है, मुझे पता है जो अनुभव में तो है, लेकिन फिर भी भाषिक रूप से जो अव्यक्त है उसको किस तरीके से मैं एक स्थान दे पाऊं, हाउ टू क्रिएट द स्पेस फॉर दैट। लिखने से मैं अपने चित्र को थोड़ा सा और समझ पाया। इनफैक्ट लिखने के कारण ही कई बार ऐसा हुआ कि अपने ही बारे में बहुत सारी चीजों को मैं नए सिरे से देख पाया। सो रिलेशन बिटवीन द वर्ड एंड इमेज। Yes, yes. And maybe this is the reason why my observation is that हमारी समाज को विजुअल लैंग्वेज की जानकारी उतनी नहीं है जितने साहित्य की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ आई एक सेंटेंस अगर मैं बोलूं कि एप्पल इज स्वीट, नाउ एज एन आर्टिस्ट यू कैन ड्रॉ एप्पल बट यू कैन नॉट ड्रॉ स्वीट। अभी बिकॉज दैट इज द वर्ड फ्रॉम लिटरेचर। या एंड उसमें क्या होता है, इतने एडजेक्टिव्स, इतने समानार्थी, इतने शब्दकोश है उसमें कि आप उस एक वर्ड को, इस वन मैसेज को आप 4 वाक्य लिख सकते हैं। लेकिन एज अ पेंटर वो स्वीटनेस को लाना, दैट इज अ ह्यूज एब्स्ट्रैक्शन टास्क। बिल्कुल। एंड मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य को जितना उसमें वो स्पेस और फ्रीडम है, अपॉर्चुनिटी है, विजुअल लैंग्वेज को शायद उतना नहीं है। एंड इट इज एट डिफरेंट लेवल, डिफरेंट हॉरिजन। सो काफी सारे इसको मतलब सपोर्टिव हो सकता है, इट कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री एज वेल एज, बट विजुअल लैंग्वेज इज वेरी चैलेंजिंग कंपेयर टू दैट ऑफ लिटरेचर और समथिंग लाइक। एंड उसमें भी एब्स्ट्रैक्ट को क्रिएट करना, क्योंकि मैंने काफी सारे एब्स्ट्रैक्ट प्लेज और एब्स्ट्रैक्ट नॉवेल्स को, जहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट है, शब्द है, वहां पे आप फिर भी मैसेज कन्वे कर पाते हैं, लेकिन एक एब्स्ट्रैक्ट विजुअल इमेज से मैसेज कन्वे करवाना इज लाइक इट्स नॉट दैट फ्री फ्लोइंग और इजी कंपेयर टू दिस थिंग। सो विजुअल आर्टिस्ट एंड इसमें भी एब्स्ट्रैक्ट पेंटर्स की काफी चैलेंजिंग। इसीलिए ये जो शब्द है इमेजिनेशन, या इसी में शब्द छिपा है इमेज। एंड इमेज एंड इमेजिनेशन, वन ऑफ द ग्रेट बुक, मनी दा रोट अ ग्रेट बुक ऑन दैट। तो वो जो स्वीटनेस जो है ना, वो तो आप व्यूअर को इमेजिन करनी पड़ेगी, या सॉरनेस, इट डजंट मैटर। इट इज एक्चुअली अ सजेशन टू यू नो टू बट फ्रीडम भी है, ही कैन इमेजिन सो मेनी इमेजिनेशन। साहित्य में वो बन जाता है, क्योंकि स्वीट बोले तो स्वीट ही हो जाता है। कलाएं हैं वो आपको एक कल्पना में आने का अवसर तो देती हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। Manish ji, excellent talking to you and discussing, and शाम तक भी जा सकता है उसमें, बट आई नो मैंने आपका बहुत समय लिया। आई जस्ट सेड कि आधा पौना घंटा होगा, लेकिन ये तो बातें ऐसी चलती गई। इट वाज सो इंटरेस्टिंग। सही बात है। इट वाज सो इंटरेस्टिंग। मैं टाइम देख के मैं रियलाइज हो कि आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स। No, it's not that. You've given a lot of time. I'm thankful to you for that. No, not at all. It was so interesting. But I think for this session, As I I would said, like, I'm a very spontaneous speaker, so बिल्कुल ऐसे ही होता है उसमें। So I would like to conclude now for this session, and maybe on another opportunity we meet again once again, and maybe we'll talk about this.
Yeah. So, friends, this was Manish Pushkale, a brilliant abstract painter who has a unique style, a unique way of expressing his expressions and experiences. So, I believe that you have found this very interesting. And thank you, Manish ji, for being a part of this program, being with us. It's a great time with us. Thank you, Vasanji. Thank you so much. So kind of you. Thank you so much. Yeah. And thank you, friends. Do like, share, comment, and subscribe channel We Are Artists. And thank you very much for being with us today. Thank you.